stream of this Premier League season 2024-2025 of Premier League, basically. And obviously, we're covering Southampton versus Arsenal. But all the other games are going to be super exciting, guys. एक बार ज़रा मैं प्रीमियर लीग टेबल खोल लेता हूँ बिकॉज चार टीमें हैं हु आर कंपीटिंग पांच टीमें हैं जो compete कर रही हैं फॉर चैंपियंस लीग स्पॉट so that is going to be even more exciting than this particular game. It's chat on the game. माहौल पूरा वेवी लिवरपूल फैंस के लिए तो माहौल सुपर वेवी है आज सब कुछ ही वेवी है आज नॉट करंटली रिसीविंग डेटा फॉर दिस स्ट्रीम हाउ कैन दैट बी पॉसिबल Tobias, welcome back, my Finnish friend. How are you? A good old friend from Lapland. Long time we haven't seen you. Where have you been? Just thought I was going to stop by. It's always nice to see some OGs in the chat. Nice to have you back after a while. Hope you're doing good. Going to watch the Man United game. All the best. I mean, although Manchester United have had a terrible season, I wish you had come for the Europa League final stream. I was extremely disappointed that Spurs won, but hard luck for Manchester United. Kind of shit, still kind of depressed from the final. I mean, I actually don't have any words to console you, unfortunately. I wish I did, but you know what? The only consolation that I can give you is from here. You can only improve from here. You can't get worse from here. If it gets worse than this, it's finished. But still, I mean, thanks for stopping by. Really appreciate it. I now that the season's over, I'm also planning to do some gaming streams. I don't know what kind of games you're interested in. Let me know. I've recently started playing Star Wars Battlefront 2, so if you're interested in that, you can check out that stream later on. Ganacho and Fernandez are going to leave. I don't know if Bruno Fernandez is going to leave because Ruben Amorim doesn't want him to leave. I've only heard about Alejandro Garnacho leaving. I haven't heard about nothing concrete about Bruno Fernandez. I haven't really heard about him leaving, but I do know that I think Luke Shaw is going to leave. I think Garnacho is going to leave, and I think there are going to be a lot of changes in the Manchester United team, and there have to be. Can you imagine Spurs are going to be playing Champions League football this season, and not Manchester United? Ashish, welcome back. Just get my man Raya Golden Glove. That's it. That'll be great for him. If you remember, David Raya actually should be one of our players of the season because he has dug us out in a lot of tricky, tough situations. Vivek Bhai, hello. Good evening. I checked whether you were doing a stream or not. So last minute, I decided to do a stream. Uh, I just hope. Wait, what? 200 million from Saudi. Kind of gonna have to take the deal. 200 million. Where is this news coming from? Are you sure about that? I just hope Kobe Menu or Ahmad doesn't leave. I don't think they will. I think they're a part of Ruben Amorim's project at Manchester United. So I doubt whether they will leave or not.
I don't think that Kobe Mano or Ahmad are going to leave. Raya has been a contender for Golden Ball, and if he gets it, that's going to be another plus. And I think, like I was saying, he has dug us out from a lot of tricky situations. That game against Aston Villa, start of the season, and quite a lot of other games, he's really kept us in it. I've heard from multiple sources, but I can't be sure. Yeah, right now it's all transfer rumors. Nothing is certain. Um, and we'll get into transfers in just a second. All chill. Thoughts on Sunderland getting promoted? Super excited. I really wanted Sunderland to qualify. Um, Sheffield have had their chance. I feel Sheffield have already played in the Premier League. They got relegated, then they had the chance to get promoted again. But I feel I wanted to see Sunderland get promoted. I know that they've gone through some really tough times. They went down to Division 3, and from there they've dug themselves out of a huge financial hole. So if you guys haven't checked out, there's this documentary on Netflix of Sunderland, and you should check that out if you want to know the exact situation, why they got relegated, and why they just went further down the rabbit hole. But now they've done really well, and now they're making a comeback, and I'm really stoked to see them back in the Premier League. And what a goal, by the way! What a fantastic goal! Matlab last uh, the finish was absolutely amazing. It was Champions League level finish and completely deserved to be the winning goal in that match and get Sunderland qualified. Super stoked for them to see them in the Premier League. We would need a leader like Bruno to stay. I think from what I've heard, from whatever sources that I've read, heard, spoken to, I feel Bruno Fernandes is a big major part of Ruben Amorim's project of his rebuild at Manchester United. So I don't think that he's going to leave. I really don't. Also, guys, if you haven't liked the video, would just appreciate if you could like the stream. Why I have a feeling we considering making Rice permanent captain. The first thing that came to my mind today when Rice was announced as captain was that they're going to, like, this is some kind of a message, or this is some kind of a warning, maybe. Warning to nahi hogi. I don't think it's going to be a warning, but I do feel that it's definitely a message. Oh no, not again.
Apologies for the slight hiccup in the network. I apologize for that. It's not my control, but I think it's okay again. Somewhat. Oh, what a header that should have gone in. Good early chance from Mikel Merino. Unbelievable. Yeah. Oh, what a chance for Southampton. Good clearance. Should do better. Sterling should do better. Can't do it.
Oh, Raheem Sterling off target as usual. ठीक हुआ आई थिंक ठीक हो गया थोड़ा फाइनली बट आई डोंट नो ऐसे ही चलता रहेगा या फिर oh my god what fluctuating quite a lot sorry about this guys net's fluctuating quite a bit हाँ भाई प्यार दो लाइक करो वीडियो को स्ट्रीम को प्लीज लाइक कर दो दैट्स ऑल आई आस्क पहले सीजन में 15-20 लाइक मिल जाती हैं अगर स्ट्रीम पे तो नथिंग लाइक इट टू माय नॉलेज अब तक किसी किसी और ने गोल नहीं मारा है ऑल गेम्स करंटली nil nil uh wait wait oh my god Nottingham Forest away to Nottingham Forest in a game that you have to win 1-0 down they are playing drunk they're not taking this seriously they're not playing seriously they're definitely high but they wouldn't want to lose on the day that they're going to lift the trophy just ruin the feel for them Liverpool are 1-0 down Crystal Palace have scored the first goal of the night Nottingham Forest Chelsea still 0-0 United Aston Villa. I mean, does that game really matter? Where is Aston Villa? Aston Villa. Oh, that game does matter for Aston Villa. If Villa win, wow, they have every chance of qualifying. Newcastle, every chance. Currently, City, Newcastle, and Chelsea are in the Champions League. Why are you worried then? Top 5 are qualifying for Champions League. Number 6 is qualifying for Europa. If Nottingham win, then oh yeah. Oh yes. Oh yes. I'd rather my club lose to now. Wouldn't you rather prefer to be in second? Everybody who was saying, "Oh, second again," wouldn't you guys rather prefer to be in second than have such a nail-biting last day where you don't know whether you're going to be playing in the Europa League or whether you're going to be playing in the Champions League or you're not going to be playing in Europe at all? Wouldn't you rather be comfortably in second, qualified for Champions League, playing against Southampton away, no pressure, no worries, no issues, just gonna enjoy your sunny afternoon playing football, last game of the season? I bet you all would love to be in Arsenal's position now. I bet everybody would love to be in Arsenal's position now. What's up, Bitter? How's it going, my friend? How are your holidays? लंबी छुट्टियां नहीं बना रही मैंने तो सुना मुंबई में खतरनाक बारिश हो रही है क्रॉस डिफ्लेक्टेड कॉर्नर आई थिंक टचवुड नेटवर्क ठीक हो गया Nikhil was saying, I'm sorry before I cut you off. I'd rather my club lose to Betis in the conference final, irrespective of the banter my club would face. However, I'd rather have my club beat Forest today to secure a Champions League spot. Of course, that would be
the most ideal situation for Chelsea right now. But even if you draw, you're still qualifying for Champions League at this moment. Top five are qualifying for Champions League at this moment. What kind of a back pass was that? Anyway, 14 minutes gone, nil-nil everywhere except at Anfield where Crystal Palace have a 1-0 lead. I really wish सारे के सारे results में यहाँ लगा सकता था. I try and figure out next season. I try and figure out how to do that. So much more to learn. Bhai, having fun, disconnecting from football and stuff is actually amazing. I can understand that. Sometimes the good thing about doing अरे यार ये मेरी स्ट्रीम कट गई क्या? What the hell? अब क्या हुआ? गाइस अपनी अपनी फीड रिफ्रेश कर दो एक बार. आई थिंक कुछ ग्लिच हो गया है जिसकी वजह से स्ट्रीम रुक गई. बट इट हैज स्टार्टेड अगेन. हाँ मैं कह रहा था बिफोर आई गॉट सो रूडली इंटरप्टेड बाय इंटरनेट दैट the good thing about doing a gaming stream from time to time is it allows you to disconnect a little bit from football and just put your mind somewhere else and not always. वरना तो पागल हो जाते हैं मतलब all this banter that keeps going on 24/7 on Instagram, Twitter and everywhere else. Banter going on YouTube. आजकल तो YouTube को नहीं छोड़ रखा. So I feel sometimes it's nice to just take a step back a little bit and ease off that pressure. Do something else. Do something that you enjoy, have fun with, and explore a new avenue. So I think it's a great thing to take a vacation. फिर भी रोमानो का बच्चा मेरे फीड में आ ही जाता है. Have you noticed अब फिर से आर्सेनल के बारे में अब फिर से नेगेटिविटी फैलानी शुरू हो गई है जस्ट बिकॉज की लिवरपूल ने वर्ड्स और वो कंफर्म कर दिया. क्या नाम है उसका? फ्रिम्पोंग. एंड अब तक हमने जोकरेस या सेस्को कंफर्म नहीं करा तो अब हमारे बारे में नेगेटिव न्यूज बननी शुरू हो गई. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस नेगेटिविटी. ये सारे रूमर्स हैं. वी डोंट नो फॉर श्योर हो क्या रहा है एग्जैक्टली. मार्टिनेली क्रॉस कॉर्नर. Sometimes too much of Arsenal can destroy your mental peace. Learned that last a while ago. अब अपना रहा हूँ. Yeah, I agree. I completely agree. भाई मेरे साथ भी same situation है. I just okay. We have another goal. Another goal has been scored. Tottenham has scored. Tottenham has scored against Brighton. Tottenham are 1-0 up against Brighton. Meanwhile, Arsenal with a corner against Southampton. How long has it been since we've scored from a corner, by the way? What a poor cross from Raheem Sterling. Yeah, Raheem Sterling is just so poor, man. And now he's allowed Southampton to hit us on the counter. Zinchenko does well. How many times is Sterling going to be the culprit?
अरे ये बार बार मेरी स्ट्रीम क्यों बंद कर दे रहा है? मेरी स्ट्रीम बार बार क्यों बंद हुए जा रही है? मेरी तरफ से तो अब सब सही हो गया है। ये बार बार मेरी स्ट्रीम को क्यों बंद किया जा रहा है? Southampton are feverishly appealing for a handball. This is going to be a VAR check. VAR is having a look at this. Let's go. The race for 15th is heating up. Agreed. जरा नीचे जाके देखे तो VAR has said no to the penalty appeal, so no penalty for Southampton. Oh my god, that's a foul. नेटो की भाई क्यों नहीं खिला रहे इसको? वो बंदे को आर्सेनल फूड चेकअप करने के लिए लाए थे। 90 minutes worth a heart attack if I must rely on a draw, brother. I honestly can't rely on United beating Villa at Old Trafford. Nobody can rely on United for anything these days. Nobody can rely on United for anything. My God, look at Manchester United, man. Look at how bad they are. अगर लेस्टर का थोड़ा सा अच्छा सीजन होता ना, लेस्टर और इप्सविच का, United literally 14 points away from relegation. Another goal has been scored. Brentford have scored against Fulham. Brentford have taken a 1-0 lead and they have now overtaken Brighton in the 8th spot. I feel more goals are coming. Gundogan overhead kick. Manchester City have also taken the lead, boys. Manchester City have also taken the lead. That was horrible from Martinelli, bhai. Horrible from Martinelli. All right. So Manchester City have basically cemented with that goal. Marino has hit the crossbar. Almost scored. Manchester City have basically cemented their spot in the Champions League now. They are 1 point behind Arsenal.
Good cross by Martinelli here. Should have scored. Merino should have kept that header down. Didn't realize it was Nottingham Forest versus Chelsea. That is a crazy. That is the craziest game for tonight. I'm not even gonna lie. That is the craziest game for tonight because everything hinges on that. And it's Nottingham Forest at home, Chelsea away. तो अगर Nottingham Forest ने अभी गोल मार दिया, Chelsea will fall into seventh. Champions League qualifications now between Forest, Villa, and Chelsea. Yes, and Aston Villa is such an easy game against the Red Devils. Should they still be called that? Red Devils? What is so scary about them? Arsenal ने अब तक गोल नहीं मारा है. I'm surprised. We haven't really shown up yet. It's not what I expected. Fine. Imagine that. Imagine that. Liverpool, Arsenal, and Spurs are the teams that are qualified for Champions League till now. Like confirmed qualified. Although I don't think Manchester City. I mean, I don't think that Fulham are going to overtake Manchester City. Villa, Newcastle, Chelsea, Forest, all nil-nil. Believe. There it is. ठीक है वहाँ पीछे लिखा हुआ है देखो believe from Ted Lasso. I wish that thing was a little bit bigger ताकि अच्छे से दिखता. But believe. Arsenal shot on target saved by Ramsdale. I'm sure Newcastle will be one of the top five. Right now, it's literally a coin toss. Oh my God. Newcastle, Chelsea, Aston Villa, all on same points, all on 67. Nottingham Forest, 1 point behind on 66. Ugh. यार I have to मेरे को match भी लगाना है यार. I want to put that match also. I want to watch Nottingham Forest versus Chelsea more than I want to watch Southampton versus Arsenal. So basically, 6 teams from Premier League. Yep. Good clearance from Kieran Tierney. Will qualify for UCL. Yep. Spurs have qualified. Liverpool and Arsenal have qualified. 3 teams have already qualified. Now, City, Newcastle, and Chelsea. 3 more teams can qualify. City, right now, at this moment, City, Newcastle, and Chelsea are qualifying for the Champions League. Aston Villa are qualifying for the Europa, and Nottingham Forest are not qualifying for anything, despite the great season that they had.
Will miss Tierney and Jorginho. F off Zinchenko from my. Why F off Zinchenko, man? He can't defend. I understand that. But why F off and everything? Let him go in peace. Oh no. Oh no. We're just talking about Zinchenko defending and Southampton created a chance from that side. भाई अगर जिंचेंको की उस तरफ से अभी पेनिट्रेट कर देते ना तो मुश्किल हो जाती. Crystal Palace is also in Europa League, correct. भाई साउथहैम्पटन अच्छा खेल रही है यार. Pathetic passing. अबे pathetic passing. Arsenal playing a very very risky game. बॉय सॉरी कि हम तुम्हें इतना तकलीफ दे रहे हैं तुम्हारी छुट्टी वेकेशन के टाइम पे स्पेशली जिंचेंको. Sorry, my bad. My club's defender. He just can't defend. It's not his fault. It's my fault for expecting a defender to defend. If Chelsea win the conference, we'll get Europa too. एक तो दूसरे क्लब्स का कूड़ा कचरा लेना बंद करना पड़ेगा. हाँ आई फील दूसरे क्लब्स का कूड़ा कूड़ा कचरा नहीं लेना चाहिए. पुअर क्रॉस फ्रॉम मार्टिनेली. भाई मार्टिनेली का भी कोई गेम बहुत खास नहीं लग रहा है मेरे को. जिंचेंको को कम से कम बॉल कंट्रोल एंड थोड़ी सी सेंसिबिलिटी ठीक ठाक तो है जब अटैक करते हैं क्रॉसेस देते हैं. मार्टिनेली पता नहीं क्या कर रहा है यार. क्या हो क्या गया मार्टिनेली को. थ्रो इनटू आर्सेनल. कॉच गेमिंग हेलो भाई गुड इवनिंग कैसे हो. आर्सेनल. आर्सेनल तो देखो आर्सेनल अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है चाहे कुछ भी हो. आर्सेनल हैव क्वालिफाइड फॉर यूसीएल. कोई दिक्कत नहीं है हमें. एंड एक रिलेटिवली सा आसान गेम है तो वो उसको भी हम थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल ज़्यादा खड़ी कर रहे हैं. चलो बाकी गेम्स का भी स्कोर लाइन जरा चेक कर लेना फटाफट. मार्टिनेली गुड स्टील फिर से क्लियर ऑफ कर दिया. मैन सिटी अभी भी 1-0 से आगे है. साउथहैम्पटन आर्सेनल 0-0. क्रिस्टल पैलेस एनफील्ड पे लिवरपूल को हरा रही है 1-0 से. टॉटनहम ब्राइटन को 1-0 से हरा रही है. ब्रेंटफोर्ड वुल्व्स को हरा रही है 1-0 से गाइस. ब्रेंटफोर्ड वुल्व्स को हरा रही है 1-0 से. एंड फिर से अगर मैं टेबल पे एक नज़र मारूं तो मैन सिटी अभी थर्ड पर है. न्यूकासल फोर्थ. चेल्सी फिफ्थ. तो ये अभी ये टीम है जो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर रही है. बाकी एस्टन विला छठे नंबर पे है. नॉटिंघम फॉरेस्ट सातवें नंबर पे. मार्टिनेली में रॉड्रिगो के एडिट्स बनाने लग जाऊंगा सही से खेल ले. अरे अब ध्यान रखना पड़ेगा गाइस. लोग ना बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रहे हैं क्लिप्स वगैरह यूज़ करने पे. अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और डीपली रिसर्च करूंगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन हो क्या रही है. क्योंकि अपेरेंटली इंडियन कंपनीज जो हैं स्पोर्ट्स कंपनीज न्यूज़ कंपनीज ये अपनी क्लिप्स यूज़ नहीं करने दे रहे हैं. एंड सारे चैनल्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का वो कर रहे हैं. एंड अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक हटाना है तो आपको 18-20 लाख रुपए देने पड़ेंगे चाहे आपने 10 सेकंड 20 सेकंड का ही क्यों ना क्लिप यूज़ किया हो. तो काफ़ी अजीब सी सिचुएशन चालू हो रखी है. एंड थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है. क्योंकि अभी काफ़ी कुछ बड़े बड़े चैनल्स हैं जिसपे कॉपीराइट स्ट्राइक लगे हैं. उनको शायद बंद करने वाले हैं. क्या था चैनल का नाम. बीइंग इंडियन. मोहक मंगल. इन सबको बंद किया जा रहा है.
इनफ, फिर से एक और साउथहैम्पटन का। बीइंग इंडियन था, दूसरा कोई चैनल था। हाँ, तो काफी कुछ सिचुएशन चल रही है अभी, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, व्हाट द सिचुएशन इज, बट इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। मैं जब छोटा था तब तो पहले आर्सेनल का नाम सुना। ओजिल था पहले, बिटर का फेवरेट प्लेयर है मेसूत ओजिल। एंड एक्चुअली ओजिल जब आर्सेनल आया था तो ओजिल ने बहुत बचा के रखा हम लोगों को, बहुत ज्यादा। वो वर्ल्ड क्लास था वो बंदा। सेम भाई, दैट्स व्हाई आई एम एन आर्सेनल सपोर्टर, बिकॉज ऑफ ओजिल। समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ओजिल था ही स्पेशल। फौज गेमिंग, तुम तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आर्सेनल फैन थे। आई I मीन mean, तुमने ये जरूर बताया था कि तुम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के फैन हो, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो। तुमने कभी बताया था कि हमको चैनल पे कि तुम आर्सेनल फैन हो। फिर से एक और टट्टी पास, एक और बेवकूफों वाला पास। क्या हो गया यार मार्टिनेली के गेम को, बताओ यार। प्रीमियर लीग में आर्सेनल, बढ़िया यार, मतलब परफेक्ट। और कोई लीग में सपोर्ट करते हो, और कोई लीग में? ला लीगा में रियल मैड्रिड एंड रियल बेटिस, चलो अच्छा है। रियल बेटिस का वो कल्चर तो पता ही होगा तुम लोगों को कि वो क्रिसमस टाइम पे टॉयज फेंकते हैं ग्राउंड पे, पूरा क्राउड आता है, टॉयज फेंकते हैं ग्राउंड में, ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको उनमें वो बांटा जाए। रियल बेटिस का बहुत अच्छा कल्चर है वो। रियल मैड्रिड नहीं करती, जबकि उनके पास 100 करोड़ और पैसे हैं सब में बांटने के लिए। एनीवे, वो उनके ऊपर है। बंडेसलीगा में एफसी बायर्न, तो काफी कॉमनैलिटी है सब में। Guys, this is also the last game of Raheem Sterling for Arsenal. और टूट गई, बोलते ही उसके घुटने पे चोट आ गई। लंबे से ऑफ साइड लग रहा है मेरे को तो ये। नहीं ऑफ साइड। आई एम सरप्राइज्ड बाय दैट डिसीजन। न्यूकासल, चेल्सी एंड एस्टन विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट स्टिल 0-0। आईएसएल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। आईएसएल अब जब चालू होगी, आई थिंक इट विल बी व्हेन, अगस्त, जुलाई अगस्त। आई होप जल्दी चालू है यार, आई होप जल्दी चालू है। निखिल कह रहा है इज नॉट कमिंग बैक टू अस फॉर आई होप। अगर अगर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं हुए तो तब कहीं कहीं तो जाएगा वो। ओजिल ऑन लेफ्ट विंग टू मार्टिनेली एट लेफ्ट, बताओ, व्हाट अ कंपैरिजन। गाइस, इट्स ऑलमोस्ट द फर्स्ट हाफ।
एंड मुझे एक्चुअली इतनी टेंशन नहीं हो रही है जितनी सर्टन मिस्टर निखिल सुशील को हो रही होगी अभी उसको, न्यू कासल फैंस को, सिटी फैंस को, फॉर टू अ सर्टन एक्सटेंट, चेल्सी को, एस्टन विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट फैंस को। चलो बाय बेटा, करो चलो बाय बाय, सी यू लेटर। हाँ, एंजॉय योर वेकेशन यार, अपनी वेकेशन एंजॉय करो, मेक द मोस्ट ऑफ इट। सी यू लेटर। Good cross from Martinelli straight to Ramsdale. Pathetic. Offside. Tamanna, good decision by the referee. He was not offside. Big stress. Oh dear. Oh, Martinelli has a chance. Martinelli misses one-on-one situation. That was the chance for Martinelli. Oh, and he was on side as well. It would have counted. What a first touch, and what a terrible finish. Good save by Ramsdale. अरे यार, चिप ही कर देता है यार, इसको चिप शिप करना नहीं आता क्या? ये प्रीमियर लीग लेवल का स्ट्राइकर है, इसको चिप नहीं करना आता? Germany 2014 squad: Ozil, Cruz, Klose, Muller, Lahm. That was too goated. That team was just too goated. Benedict Howard in defense, Mertesacker in defense, Hummels in defense. भाई, एंड क्रूज ने तो कैसा डॉगी बना के पीटा था यार उस गेम में ब्राजील को। ओ जिनचेंको, एक और चांस, कॉर्नर फॉर आर्सेनल। बिल्कुल ही डॉगी बना के मारा था। फेल्ट सो बैड फॉर ब्राजील दैट डे। फैंस रो रहे थे, ब्राजील के प्लेयर्स को ऐसा लग रहा था कि पता ही नहीं हुआ क्या। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम जर्मनी। क्या था वो, एक और आंड्रे शर्लर, स्ट्राइकर, मिरोस्लाव क्लोसर, श्वाइनस्टाइगर, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बैस्टियन श्वाइनस्टाइगर। एंड ऑफ ऑल पीपल, गोल किसने मारा? मारियो गोत्जा। एंड became goated forever. रात में देखा था मैच, मेरे को याद नहीं है, रात में देखा होगा, ब्राजील में मैच था, सुबह सुबह मैच आया होगा, करीब रात के 1-2 बजे मैच चला होगा। 7-1, दैट वाज द बिगेस्ट शो। ये कीरन टियनी स्कोर्ड फाइनली। Kieran Tierney has scored in his final appearance for Arsenal. I'm still not happy with this decision that he's going to be leaving us at the end, and he's been lifted up by his teammates. This is such a bittersweet moment, man. Kieran Tierney scores for Arsenal. Arsenal are 1-0 up before the first half. एक दो बजे था शायद, हाँ, very likely. I feel bad that Tierney is leaving. Advait doesn't like Kieran Tierney for some reason. That's because Advait is fat and lazy and he doesn't like to run. That's why he doesn't like Tierney. uh, मैं 11 साल का था 2014 में। मैं कितने साल का था 2014 में? मैं 22-23 साल का था शायद, 22-23 का था मैं। He was the one who played with an injury while also being bloodied, yes. Schweinsteiger was just too good, man.
Sterling stolen it from Zinchenko of all people. अपने प्लेयर से क्यों भिड़ रहा है जाके? Wood, oh my God, Chris Wood nearly scored. Oh no, Chelsea, 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 Chelsea. What will happen to you, Chelsea? That was clearly 1-0 Forest. Oh no. I'm pretty sure we're gonna cut to a lot of chances at halftime. जो बाकी games में हो रही हैं. What a foul. That is a foul. Easy foul. One minute of stoppages. Mhm. बेन वाइट को क्या हो गया यार? भाई बेन वाइट को हो क्या गया है? What a ridiculous performance from Ben White. He's completely lost. क्या हो गया? खाना खत्म करो. ऐसे आधा अधूरा नहीं खा सकते तुम. चलो, first half is done, guys. I'm not taking a break. मैं बस पानी लेके आ रहा हूँ. Oh. Emmy Martinez sent off. Oh no. Emilio Martinez, the hero of Argentina, has been sent off. Okay. Calm down, everyone. Calm down. Calm down, everyone. Calm down. Bora, hello. Yo. Hello. Welcome. Um, guys, what an exciting last day of the Premier League. अभी मैं फटाफट स्कोर्स बताता हूँ, उसके बाद मैं प्रीमियर लीग के टेबल में क्या हो रहा है वो बताता हूँ. Nottingham Forest versus Chelsea 0-0. Nottingham Forest should have scored, but they missed. Man City have taken a 1-0 lead against Fulham. Aston Villa versus Man United 0-0. Aston Villa, Emmy Martinez has been sent off. Arsenal are 1-0 up against Southampton. And Crystal Palace are 1-0 up against Liverpool.
West Ham are 1-0 up against Ipswich Town and Tottenham are 1-0 up against Brighton. बाकी सब 0-0 पे चल रहा है गाइस. तो इप्सविच हार रही है, साउथहैम्पटन हार रही है, लेस्टर ड्रॉ कर रही है, यूनाइटेड ड्रॉ कर रही है. पर यूनाइटेड के गेम में उनको एडवांटेज मिल गया है क्योंकि एस्टन विला गोलकीपर एमी मार्टिनेज हैज पिक्ड अ रेड कार्ड. एंड एस्टन विला के प्रोस्पेक्ट्स के लिए, चैंपियंस लीग प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत डेंजरस सी चीज है. सब लोग कहते हैं उनाई एमरी ये, उनाई एमरी वो. एंड अभी देखते हैं क्या होता है जब उनाई एमरी डज नॉट क्वालिफाई फॉर नीदर यूरोपा नो चैंपियंस लीग. तब देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं. मैनेजर ऑफ द ईयर के लिए उसको बोला जा रहा था. जरूर. कल हमारे दो दद्दू ने अपने लास्ट मैच खेल लिए इन ला लीगा. एक तो कार्लो एंसेलोटी है, दूसरा है लूका मॉड्रिच, है ना. वैसे लूकस वास्केज ने भी अपना लास्ट गेम खेल लिया है. उसके अलावा कोई छोड़ के जा रहा है. सॉरी, मैं शी हल्क का ट्रेलर देखने लग गया, पता नहीं क्यों. वलेहो एंड लॉर्ड वास्केज ने भी. चलो तो अभी आएगा रियल मैड्रिड में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड. शैबी अलोंसो का अनाउंसमेंट हो गया है, डीन हॉयसन. एंड उसके बाद आई थिंक दे विल लुक फॉर अदर प्लेयर्स ऑल्सो. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. गाइज यहाँ पे क्या लगता है चैंपियंस लीग के लिए कौन क्वालिफाई करेगा. करंटली मैनचेस्टर सिटी, न्यूकासल एंड चेल्सी आर क्वालिफाइंग. एस्टन विला के पास थोड़ा सा चांस है, वो भी सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पर है. नॉटिंघम फॉरेस्ट 1 पॉइंट पीछे है बस. मैंने दिव्यांश की वीडियो देखी, वो बोल रहा था रेफ का भी फेयरवेल था. पॉपकॉर्न नहीं खाना चाहिए, अटक जाता है. बट इट्स द हेल्दीएस्ट स्नैक, क्या करें. मेरे को दिखाओ यार बाकी मैचेस में क्या क्या हो रहा है. मैड्रिड शायद एक लेफ्ट बैक भी देख रही है, लाइक ग्रिमाल्डो. लाइक ग्रिमाल्डो. कर्केज ले लो. टेक कर्केज. कर्केज ले लो, बिल्कुल बढ़िया सूट करेगा मैड्रिड को. क्यों दादा, कर्केज सूट करेगा. आओ. आओ. अल्वारो करेरस एंड एलेक्स ग्रिमाल्डो ऑफेंस पे ग्रेट, डिफेंस में भी ठीक ठाक. हम्म. अच्छा, अगले सीजन से ना हम प्लानिंग की ला लीगा के भी वॉच अलोंग्स कर दूं एज मच एज पॉसिबल. तो वी विल ट्राई एंड डू ला लीगा के वॉच अलोंग ऑल्सो. इस बार कर नहीं पाए, कोई नहीं.
अगले सीजन जरूर करेंगे। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि मैड्रिड वांट्स निको विलियम्स। आ गए गोल्स, व्हाट अ गोल बाय गुंडोगन। एक सेकंड गाइस, मैं बस फटाफट हाइलाइट्स देख रहा हूँ क्या चल रहा है सब। कितना बड़ा गधा है मार्टिनेज। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे मैड्रिड वांट्स निको विलियम्स। आई एम नॉट सरप्राइज दे वांट निको विलियम्स, क्योंकि आर्सेनल माइट गो फॉर रॉड्रिगो। तो अगर रियल मैड्रिड रॉड्रिगो को बेच देती है देन दे माइट वांट टू लुक टू रिप्लेस हिम विद निको विलियम्स। एमी मार्टिनेज डम एस डिसीजन गेट्स अ रेड कार्ड फॉर एस्टन विला। निखिल कह रहा है द लास्ट टाइम आई वाज ग्लूड टू अ लास्ट डे रिजल्ट वाज व्हेन वी लॉस्ट द टाइटल टू यूनाइटेड इन द 08-09 सीजन। ऑल वी हैड टू डू वाज बीट बोल्टन बट वी ड्रू एंड यूनाइटेड वन अगेंस्ट विकेट। ओह नो, व्हाई डोंट, तो बेसिकली गिफ्ट कर दिया तुमने टाइटल उनको। हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, they have indeed, times have changed quite a bit. बट निको विलियम्स को कहाँ डाल लेंगे अगर राइट विंग पे, तो उससे अच्छा कि प्रॉपर राइट विंग ले ले, लेफ्ट फुटेड राइट विंग। बात भी सही है। विल निको विलियम्स वांट टू प्ले एज अ बैकअप, क्योंकि राइट में भी कौन खेल रहा है मैड्रिड, लेफ्ट में खेल रहा है विनीसियस, सेंटर में खेलता है एम्बापे, है ना, या फिर या वो 4-4-2 खेलते हैं। मार्टिनेली ले दो, मार्टिनेली इज परफेक्ट। निको को स्टार प्लेयर बनाना अच्छा लगता है, ना कि बेंच प्लेयर। आई कंप्लीटली एग्री। इफ निको विलियम्स is going to make a switch from Bilbao to Real Madrid or anywhere else, he wants to be at minimum, उसको कम से कम रेगुलर स्टार्टर तो रखना ही पड़ेगा टीम में। बाकी ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, पर रेगुलर स्टार्टिंग तो मांगेगा ही वो। ही विल नॉट लिसन टू एनीथिंग एल्स। आई थिंक निको वांट्स टू बी अ स्टार बट एंड्रिक एंड आर्डा गुलर। आर्डा गुलर से क्या प्रॉब्लम है यार? आर्डा गुलर ने इस बार क्लासिको में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आर्डा गुलर की वजह से तो 2-3 चांसेस बने थे मैड्रिड के, एंड उनमें से 2 में तो स्कोर भी किया था। तो फिर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्डा गुलर को नेगेटिवली या नेगेटिव एस्पेक्ट में क्यों देखा जा रहा है। आर्डा गुलर को तो कम से कम
एट द एज 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, तो उसको काफी क्रेडिट देना चाहिए कि उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है मैड्रिड के लिए. प्रीमियर लीग विल रिटर्न 16th August 2025. ओह माय गॉड. कितने महीने? मई, जून, जुलाई. ओहो. हम्म. यहाँ ये तो है. एंड्रिक एंड आडागोलो को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनकी एज की वजह से. पर अपनी एज के हिसाब से जब भी उनको जो भी टाइम मिला है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो काफी खतरनाक है. निखिल कह रहा है कर्केस टू लिवरपूल डन. हियर वी गो. रुको ला रहा हूं. लॉर्ड एल्बा को कोई ले लो. एक टाइम पे इतना क्वालिटी प्लेयर था डेविड एल्बा कि तुम बोल देना लॉर्ड एल्बा को ले लो तो हंसते. पर अब आई थिंक वो उसका टाइम खत्म हो गया है. सैड टू सी, पर सभी प्लेयर का टाइम आता ही आता है, सिवाय लूका मॉड्रिच के. लूका मॉड्रिच को भी मार्का ने बोला था स्टार्टिंग में कि इट्स नॉट अ गुड साइनिंग. मार्का रोनी नहीं, मार्का जो उनका न्यूज़पेपर है स्पेनिश वाला, MARCA. मार्सा है, मार्का है, पता नहीं. चलो सेकंड हाफ है स्टार्टेड. किस 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 की किस्मत में लिखा है? हाँ? निखिल, किस किस की किस्मत में लिखा है? चैंपियंस लीग. चैंपियंस लीग किस किस की किस्मत? राइट नाउ मैनचेस्टर सिटी क्लियर, न्यूकासल, चेल्सी, एस्टन विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट टू क्लोज टू कॉल. टू क्लोज टू कॉल. ये अमेरिकन इलेक्शन की तरह है. नहीं चाहिए ला. ला नहीं चाहिए. सी घटिया कुर्सी है यार मेरी. मॉडरिच लद्दू को जिस टाइम पे साइन किया था ही वाज नथिंग, बट नाउ ही इज अ लेजेंडरी मिडफील्डर विद अ डेकेड ऑफ सक्सेस. आई थिंक मॉडरिच को डायरेक्टली स्पर्स से साइन किया था ना. मॉडरिच वाज साइंड ऑन डायरेक्टली फ्रॉम स्पर्स. हाँ, तो उस टाइम पे कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं था. यश, हेलो. वी वर वंडरिंग वेयर यू वर. वी वर वंडरिंग वेयर मिस्टर यश वाज. गाइस 13 लाइक्स हैं, इसको 14 लाइक्स कर देना. केवी भाई, इवन वी आर लिंक्ड विद रॉड्रिगो. तब तो फिर चेल्सी शुड नॉट क्वालिफाई फॉर UCL.
Come on, Nottingham. Let's go. Nottingham Forest. ड्रिप कर दिया ना, सुट्टा ब्रेक, चलो चलो, एंजॉय एंजॉय। सॉरी, ड्रॉप कर दिया। यार ड्रिप का बहुत अलग मीनिंग होता है, ठीक है। आई वाज लाइक कि आई थिंक उसके लिए आम बात होगी। ड्रिप करना। फिर मैंने ऊपर वाला पढ़ा, फिर सही से मासी को ड्रॉप करना आया होता है। ओके ओके। भाई मैं जा रहा हूँ मैच देखने। कौन सा मैच? रियल मैड्रिड का मैच थोड़ी ना आज। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन चेल्सी क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस लीग। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा जिंक्स करना पड़ेगा अब तो। अगर तुमने बता ही दिया है दैट इफ रोड्रिगो इज लिंक विद चेल्सी, तो फिर जिंक्स करना पड़ेगा भाई। जिंक्स। अरे नहीं, मैं जब भी जिंक्स करने की कोशिश करता हूं ना किसी को, मेरे को जिंक्स हो जाता है। या व्हाट नॉनसेंस। सीरियसली नहीं। आई डोंट बिलीव इट। Forest Chelsea game delayed by a couple of minutes due to technical issues. I don't believe it. I do not believe it. मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ वैसे। ओहो। Corner for Southampton. यश भाई, we will be in for a striker, winger and centre back. उसका क्या हुआ जो तुमने 100 million वाला विंगर खरीदा था? मुड्रिक। मुड्रिक को क्या हो गया? What a waste of 100 million वैसे। साउथ अमेरिका के किसी कस्बे से 20 प्लेयर और उठा लो। ओ हियर वी गो, मार्टिनेली। अरे यार ये सुलेमानी पकड़ लेगा इसको, ही इज टू फास्ट। ही इज रियली फास्ट। यू आर नॉट रेडी फॉर एस्टेवाओ एंड आंद्रे सैंटोस। मुड्रिक्स करियर इज ओवर। वही तो मैं वही तो आई एम सेइंग, 100 million pounds, quite a waste. Estevao and Andres Santos are pretty good, but Arsenal also have Max Dowman. Arsenal have Max Dowman, Miles Lewis Skelly. Sancho will be sent back. Happy to pay 5 million to send him back. डिफेंसिवली भी तो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। यू हैव गुड प्लेयर्स, यू हैव कॉलविल, और वो भी तो अभी लूकस लीवा भी तो आ गया है। इज नॉट डिफेंडर, आई थिंक मिडफील्ड, डिफेंसिव मिड है वो। एंजो फर्नांडिस भी है, डिफेंसिव मिड। गुड ऑप्शंस इन मिडफील्ड वैसे। चेल्सी हैव decent options in midfield. Oh my god, what a dumbass foul. But that's okay. Tierney also scored a goal. Not comparing, I'm sure you guys are better. I think Chelsea also have a great squad, but थोड़ा सा like form हल्का सा इतना consistent नहीं, but it's been better than the season before. इतना तो मानना पड़ेगा. It's been better than the season before. So there have been लाविया, सॉरी, लूकस लेवा। मेरे को लिवरपूल वाला प्लेयर याद आ गया for some reason. लाविया। Oh, what is wrong with me? I'm watching the Forest. I'm watching the updates of the Forest and Chelsea game like a hawk. 'Cause 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 'cause
Oh, nice. Great passing. Maneri, Rice, Partey, Ben White. I'm really disappointed with Ben White, yeah. I must say. Maneri, oh, ho, good shot. Ramsdale spills, but safe. Need a commanding centre back. Haven't had one since Silva. Hmm. Anyone that you're interested in or rumored to be interested in? Uh, Free kick for Southampton in a tough spot. No one yet. Hoyson was one, but he's gone to Madrid already. That is done. That is over. So let me watch this free kick for Southampton. 20 yards outside. Oh, Chelsea have scored. Chelsea have scored. Chelsea are 1-0 up against Nottingham Forest. Lewis Colwell has scored. Wow. Crazy, crazy, crazy. Oh, pathetic free kick. Oh, good save by Raya. यहाँ अपडेट क्यों नहीं हुआ है? Yes, it's been updated. Chelsea are 1-0 up. Chelsea are going to the UEFA Champions League. Chelsea are going to the UEFA Champions League as it stands. Oh my god, Southampton have scored. Oh my god, what the hell? What a dumbass goal, man. Southampton have scored. Chelsea have also scored. David Raya's clean sheet is gone. We didn't need that. Hmm. It's still close, guys. It's still close. Now Newcastle have to score. And Aston Villa have to score.
Oh, good pass to Ben White. Oh, how's that not gone in? How is that not gone in? What a ball to Ben White from Noneri, yaar. Oh, amazing ball, amazing pass. Incorrect corner given. Hmm. Soleimani has gone down, injured. Hmm. Brighton have also conceded. It's 1-1 between Tottenham and Brighton. Hinchelwood has scored. Oh, oh. Buntu, buntu. Shouldn't have conceded, but it is what it is now. Trossard and Saka coming on. Sterling is coming off. तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हैं. Ah. कहाँ जा रहे हो? अच्छा.
Hudson-Odoi coming in to face his former club. Forest going all attack. I have to watch the game now. I have to watch the game. I have to watch the game. Hotstar पे है. Forest versus Chelsea. For Milankovic. Aina. Corner for Nottingham Forest. Can Chelsea hold on? Can they do it? Ooh, well collected. Welcome to a deadline day fixture. I'm also watching the Arsenal game, but I am keeping my eye on this Chelsea Nottingham Forest match. Sancho, Neto, Palmer. Cucurella. Palmer. Twisting, turning. That's Lavia, right? Chelsea dark arts. Chelsea are Chelsea doing dark arts? Chelsea getting on all of their defenders to do some kind of dark arts. Corner to Arsenal on target. Sancho out and Lavia in. Oof. Oh, who blocked that? Was it Marino? अपने player ने block कर दिया क्या? Oh, corner to Nottingham Forest. Oh, what kind of a corner is that? Comes back in. Oh, clearance. Good clearance. Wasted shot from Aina. Foul from Arsenal in the other match. Hmm.
Zinchenko trying to take shot after shot. Kai Havertz is coming on. Lewis Kelly and Havertz are coming on. Chelsea on the charge. Little bit too late. End the game already. I might need a defibrillator for the next 30 minutes. Are they checking for a malicious challenge from Madueke or something? I don't know. I mean, the Dominguez was saying that it's a malicious challenge or something. I don't know if they're doing a VAR check or what's going on. Meanwhile, Everton have scored against Newcastle. Everton have scored against Newcastle at St. James's Park. Everton has scored against Newcastle at St. James's Park. Breaking news. Breaking. And will this break the back? Will this break the back of Newcastle? Will this mean that Alexander Isak is going to be available? Oh my God. What is going on? Everton 1-0 up against Newcastle at St. James's Park. How long that will last, I don't know. I just have to check. That means अबे update कर. Oh my God, that means that Villa are now qualifying for the Champions League by doing nothing. Villa Villa are now going to qualify for the Champions League by doing nothing in the entire game. They got a red card and they might now qualify. Aston Villa are now qualifying for the Champions League. Newcastle and Nottingham Forest are losing out. Madness. And Aston Villa are down to 10, by the way. Corner for Arsenal. Second sutta break. बड़ी जल्दी ले लिया दूसरा. रैशफोर्ड आज मस्त पिज्जा वगैरह लेके मैच देख रहा होगा खुशी में. He's actually done well at Aston Villa. Aston Villa currently qualifying for the Champions League. Newcastle are bowing out. Nottingham Forest are bowing out. Chelsea look comfortable right now. पर अगर Newcastle जीत जाती है, then they will overtake Chelsea in that spot. And अगर Aston Villa भी गोल मार देती है, then Chelsea are in a little bit of trouble. Meanwhile, in trouble is Arsenal. Oh, Dominguez is being subbed off. It's looking like an injury.
अच्छा, जिधर मैं पहले रहता था उधर से ही आ रहा, इसलिए सारे पुराने स्पॉट्स पर। ठीक है, ठीक, अंडरस्टूड। और चेल्सी विन और ड्रॉ विल कंफर्म आवर यूसीएल irrespective ऑफ द रिजल्ट्स एल्सवेयर। ठीक 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 ठीक। नहीं, मैं कह ना, अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, अच्छा हाँ, नहीं, चेल्सी विल स्टिल क्वालिफाई। नहीं, कैसे? इफ नॉटिंघम फॉरेस्ट स्कोर राइट नाउ, ठीक है, तो विल बी अ ड्रॉ, दैट मींस 67 पे आ जाओगे। न्यूकासल इफ दे स्कोर, वो 69 पे चले जाएंगे। एस्टन विला ने अगर मार दिया तो वो 68 पे आ जाएंगे। यू विल फॉल इनटू यूरोपा लीग देन, एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट विल फिनिश 7th in 66. Oh, what a save! Oh, what a goal! Oh, offside. Ah, damn it. I thought we had scored. Yes, draw would work based on other results. Win is a must. You have to win. Saka is well offside. This Everton win against Newcastle is looking like a shock. Everton are shockingly leading against Newcastle by what is going on? Liverpool have gotten a red card. Ryan Gravenberch has picked up a red card, and Crystal Palace are still 1-0 up. Ismail Sarr has scored that goal. And looks like Gravenberch won't be on the pitch to celebrate Liverpool's victory, unfortunately. मैन सिटी का भी मेरे को क्लियर लग रहा है, चेल्सी का भी मेरे को अब क्लियर लग रहा है। ये न्यूकासल ने अपने लिए बहुत बड़ी गड़बड़ खड़ी कर दी है। दे आर रियली शूटिंग themselves in the foot. Liverpool complacent. I think Liverpool are just enjoying their evening out. They're like pretty relaxed. Beer share, champagne, वैम्पेन, वाइन वगैरह बट रही है। हाँ, आई थिंक क्या फर्क पड़ता है यार, आई मीन Suleimane is being subbed off now. All right, 73 minutes on my clock for the Chelsea game, 78 minutes for the Arsenal game. Liverpool next season are going to be fire, absolutely. Absolutely, with the kind of signings that they've made, unstoppable. Frimpong, Wirtz, and potentially Kirkes. I mean, Kirkes is also almost certain. I think they've done some fantastic business in the transfer market, and an already strong squad will become reinforced and stronger. Wirtz, what a player! मैं उसके highlights से कर रहा, he is excellent.
Excellent. तबाही मच जाएगी. Liverpool's midfield will be the best midfield next season, without a doubt. No matter who Arsenal signs, Zubimendi or whatever, I think Liverpool's midfield is going to be a lot better. Especially with the kind of form Odegaard is in currently. Arsenal just seems to lack any kind of creativity. And Odegaard's always trying to create movements through Saka's side, so that will become very predictable for an opponent to defend against. क्या कर रहा है ये? Trossard twisting shot. Arsenal trying their best. Nottingham Forest trying their best. Ben White को रेड कार्ड ना मिल रहा है. What is he doing? Morgan gives White on the floor. Newcastle still 1-0 down. Crystal Palace still 1-0 down. 1-0 up. Chelsea still 1-0 up. Man City 2-0 up. Congratulations. I think we can comfortably say now that Manchester City have qualified for the UCL. Man City are now 2-0 up in their game against Fulham. I think that is done and dusted. Man City 2-0 up. Oh, Ben White looped up. -14 plus stoppages left in the Chelsea Nottingham Forest game. Being a Germany supporter since Michael Ballack's time, I must say Florian Wirtz is the next big name in Germany. That is a big statement that right there. He's outstanding. He is outstanding. He is too good. अभी चल रहा है बस थोड़ी देर. वर्ड्स का भाई मैं उसको अंडर 19 से देख रहा हूँ. Yash is also a Germany supporter. Nikhil is also a Germany supporter. I used to be a Germany supporter, but then I stopped. 2000, I think 4 tak I was a Germany supporter. Then I became a Netherlands supporter. They're cutter rivals. Not a good cross from Aina. क्या हो गया आयना को? Liverpool have done amazingly well in the transfer market. अब इन 3 signings के बाद I don't think they need any more signings. Striker की हाँ ज़रूरत थी तो उनके पास. पर will they make do with Darwin Núñez only? We don't know. Southampton Arsenal now in the 83rd minute. Forest and Chelsea in the 77th, 78th minute now. Words and Musiala both Nikhil, they both complement each other so much. The only 2 clubs I could see Words fit in was Liverpool or Arsenal based on the style of football. Okay, I think Newcastle have scored.
Have Newcastle scored? No, Newcastle have not scored. क्या हो रहा है? Aston Villa have conceded. Aston Villa has conceded. Aryan, hello, hello, hello. Aston Villa has conceded. That means Newcastle are now going into the Champions League. Aston Villa are now leaving the Champions League. What is going on? What is going on? क्या हाल है आर्यन, कैसे हो भाई? हाँ, लिवरपूल आर स्प्लैशिंग द कैश फॉर फैबियन वर्ड्स. ये तो दैट इज वेरी ट्रू. चेल्सी का बस ऑलमोस्ट कंफर्म मानो. चेल्सी का ऑलमोस्ट कंफर्म मानो. न्यूकासल आर लूजिंग and still qualifying. Aston Villa should not have conceded over there. Oh my god, if Nottingham Forest score right now, that means they could still qualify for Europa League. Oh, sorry, Florian Wirtz. My bad, my bad. Why do I keep getting confused? भाई मॉडरिच भी चला गया रियल मैड्रिड से, और लूकस वास्केस भी, और कार्लो एंसेलोटी भी. They've all gone. All very आंसू आ रहे थे सबकी आंखों में. एंड अ गुड फेयरवेल आल्सो गिवन टू देम, डिसेंट फेयरवेल गिवन टू देम. यहाँ पे आर्सेनल साउथहैम्पटन के अगेंस्ट विनर गोल नहीं मार पा रही. और साला एक हमारा क्लब है कहीं आर्टेटा जो सिटी ट्रैश का रेफ्यूजी कैंप बनाता है, आर्सेनल को एंड में ग्रीलिश ना लेना. अभी अभी सब यही बोल के गए थे थोड़ी देर पहले. अभी थोड़ी देर पहले क्या, जब मैच वैच स्टार्ट हुआ था तब सब लोग यही कह रहे थे कि दूसरों का कचरा हमें नहीं उठाना चाहिए. छोटा दद्दू भी लीव. हाँ. Ah, 81 minutes for Chelsea and Nottingham Forest. Chelsea still 1-0 up. 81 minutes नहीं है, सॉरी. हाँ 81 मिनट्स है, सॉरी. 82 मिनट्स होने वाला है. नॉटिंघम फॉरेस्ट फुल ऑन अटैक पे है अभी. Mm-hmm. What is Miles Lewis Kelly doing? Chelsea also fighting tooth and nail. Newcastle still 1-0 behind, but still qualifying for UCL. Aston Villa 1-0 behind, going into the Europa League.
What a goal by Martin Odegaard. Yes. What a strike. What an absolute crazy goal by Martin Odegaard, by. What an absolute crazy goal by Martin Odegaard. What a goal. खतरनाक शॉट मैन, खतरनाक. चलो मैं खुश हूँ that at least he's had a good end of the season with a good last match. चलो कम से कम इतना तो मिल गया हमको, इतना तो एंजॉय करने को मिल गया. मैं खुश हूँ इससे. शॉट भाई, यही यही तो उसको पीएसजी के अगेंस्ट मारना था. फिर लेकिन ओडेगार्ड को जब जब गाली देता हूं तब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है. गिब्स वाइट लाने का ट्राई कर रहे. दिखा दो. Come on now, keep this lead, keep this lead. 7 minutes of stoppages. That is crazy. भाई फॉरेस्ट और चेल्सी के गेम में कितने मिनट होंगे स्टॉपेजेस के? I would really like to see that. Newcastle still 1-0 behind. Villa still 1-0 behind. Forest still 1-0 behind. हम्म थोड़ा सा कम्युनिकेशन ठीक करना था यार वहां पे. भाई साहब 50-50% पोजेशन. नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस चेल्सी. Corner for Nottingham Forest. Oh no. What a pathetic ball back in. Who was that? Was that Milenkovic? नहीं, कौन था? Oh, header was on target. ये एक दूसरे के बीच में आते रहे बस. Was pathetic. David Raya gets the golden glove. Already confirm हो गया है क्या? Has it been confirmed? I thought उसे आज clean sheet रखनी थी. He need to keep a clean sheet आज. बाकी गेम्स में क्या चल रहा है देखने दो. सिटी 2-0 up, बर्नमथ 2-0 up, ब्रेंटफोर्ड 1-1 against Wolves.
Chelsea 1-0 up. Arsenal 2-1 up. United 2-0 up. United are now 2-0 up. खत्म एस्टन विला. बहुत सब कह रहे थे ना उनाई एमरी बेटर मैनेजर, उनाई एमरी को बहुत चांस देना चाहिए था. उनाई एमरी इज करंटली एट रिस्क ऑफ फॉलिंग आउट ऑफ. उसको तो यूरोपा ही खेलना है वैसे भी. उसको वैसे भी यूरोपा खेलना है. उसे चैंपियंस लीग से कोई मतलब नहीं. ही वांट्स टू प्ले यूरोपा लीग. ही वांट्स टू क्वालिफाई फॉर यूरोपा लीग. किसी तरह उसने मैनेज करा होगा कि हाँ रेड कार्ड ले लेना एंड क्वालिफाई फॉर यूरोपा लीग. वी डोंट नीड टू प्ले चैंपियंस लीग. Raya has 13 clean sheets tied with Cells. Chelsea taking their own sweet time with this corner. Sahil bhai, hello. यश कह रहा है हाँ कंफर्म हो गया. Him and Cells are sharing the golden glove. चलो ठीक, fair enough. What is that? He should have passed. What immaturity? Nottingham Forest have possession of the ball again. They almost lost possession of the ball again. कहाँ? Seriously? No way. यूरोपा लीग विनर्स 4-1. अबे यार, आई गॉट वॉलबैक इन एफपीएल जस्ट फॉर स्पर्स. मैं तो खेलना ही भूल गया एफपीएल. आई डोंट इवन नो. आई थिंक आइसैक है मेरे एफपीएल में अभी भी एज कैप्टन. अब वो खेल भी नहीं रहा है. वुल्व्स एंड ब्रेंटफोर्ड खत्म. Newcastle Everton still going on. Newcastle are still qualifying for Champions League by the way. Aston Villa 2-0 हार रही है. They are not going to qualify for the UCL. No chance. Wallbeck squad में ही नहीं है. That is quite unfortunate. 8 minutes of stoppages for Chelsea and Nottingham Forest. 8 minutes. I think कर गई qualify. I think Chelsea will qualify. I think it's all on Nottingham Forest. अगर ये draw कर लेते हैं तो they can still qualify for Europa League. If Nottingham Forest score one goal, they can still qualify for Europa League. And Aston Villa will be out of the Europa League. And that's it. Our game is also about to finish now. Champions League football for Chelsea, that is confirmed. The thing that is not confirmed is will Nottingham Forest play in the Europa League or not? Nottingham Forest still have a chance. Chelsea are definitely going into the Champions League. That is for sure. Who slipped? Corner to Nottingham Forest. That is crazy. This is one last chance. KV, Sunderland is back in the Prem. I know. I saw. What a second goal. जो winning goal था. What an amazing goal. What a finish. Tony Cruz level की finish थी वो. अब तो नॉटिंघम फॉरेस्ट वालों को सबको आगे भेजना पड़ेगा. Oh!
Oh, he's missed. He's missed. Chris Wood has missed. That was it. That was the chance. That was the chance. That was the chance. Oh, he did everything. Good trap. बस एक हल्का सा टच. चलो आर्सेनल का गेम खत्म. आर्सेनल finished second. Well done, Arsenal. Oh my God, I can't believe it. Nottingham Forest had a chance. Newcastle Everton still going on. Oh no. Nottingham. Oh, Chris Wood, what have you done? Chalo bhai, Gigi, good job on the first season. Thank you so much. Really, really appreciate it. Still three and a half minutes left in this game. But that was the chance you have to feel. My boy Waltermaid wins the DFB Pokal with Stuttgart. Nice. DFB Pokal, Stuttgart versus Kiska. I've never heard of that other team before. Nottingham Forest. Oh, फाउल. मड्रिड हेलो. बड़े भयंकर सीन्स चल रहे हैं प्रीमियर लीग टेबल में. तो खतरनाक सीन्स चल रहे हैं. खतरनाक. आई थिंक न्यूकासल का गेम खत्म हो गया है. न्यूकासल का गेम अभी खत्म नहीं हुआ है. एवर्टन इज स्टिल लीडिंग 1-0 अगेंस्ट न्यूकासल, बट न्यूकासल इज क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस लीग स्टिल. Aston Villa are going to play either in the Europa League or they're going to be out. सब कुछ Nottingham Forest और Chelsea वाले गेम पे डिपेंड कर रहा है अभी. Everything depends on the Nottingham Forest versus Chelsea. If Nottingham Forest score, अच्छा हाँ मैंने बताया था अबाउट देम. दे इवन एलिमिनेटेड लेवरकुसन. नहीं नहीं हाँ, आई रिमेंबर यू टोल्ड मी अबाउट देम. आई रिमेंबर कि एक थर्ड डिवीजन वाली टीम खेल रही है डीएफबी पोकाल में. एंड बाय द वे गाइस, अगर वीडियो नहीं लाइक करे तो प्लीज एक बार स्ट्रीम प्लीज लाइक कर देना. वुड रियली अप्रिशिएट इट. अपनी टीम की बात करें तो कीरन टियर्नी लास्ट गेम फॉर आर्सेनल. मेरे को दुख हो रहा है, अभी भी दुख हो रहा है. I feel he still had a lot more to give us. 1 मिनट 20 सेकंड बचे हैं चेल्सी के लिए. सॉरी, नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए. चेल्सी हैज क्वालिफाइड. सिटी हैज क्वालिफाइड. चेल्सी का गेम, न्यूकासल का गेम खत्म हो गया है. न्यूकासल के हाथ में अब. न्यूकासल हैव आल्सो क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग. दिस इज इट. नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑल और नथिंग. बॉल स्पिन्स. ही इज इन द बॉक्स. ओह ओह. It's still so close. It's still so close. Sorry. Gibbs White chasing. Puts it in. It's the wrong thing to do. It's the wrong thing to do. Chelsea have qualified. That much is certain. Newcastle have qualified. No Champions League, no Europe for Nottingham Forest. Aston Villa are going to be playing in the Europa League. Those are the results of the final day. Liverpool first, Arsenal second, Man City third, Chelsea fourth, Newcastle fifth. Yep, that's it. Final whistle. Hard luck to Nottingham Forest. Hard luck, man.
Well done, Chelsea. Well done, Manchester City. Obviously, very well done, Liverpool, for winning the Premier League. But they lost their game today, Naj. अच्छा नहीं ड्रॉ कर लिया चलो लास्ट में वेल डन दैट आल्सो इज प्रीटी गुड मोहम्मद साला 84th minute goal so good with a man down they managed to equalize and next season is going to be even more dangerous एक बार फाइनल टेबल देख लेते हैं लिवरपूल फर्स्ट आर्सेनल सेकंड मैन सिटी थर्ड चेल्सी फोर्थ न्यूकासल फिफ्थ एस्टन विला सिक्स्थ Crystal Palace also qualify for Europa. Tottenham also qualify for Champions League. So, wow. Germany has a very good future, and that too, Kimmich is going to lead these boys now. Leader among men. आज निखिल भाई रात में UCL anthem बजा के सोएंगे. He deserves it. Chelsea deserve it. To come to Nottingham Forest to a difficult place in a very high pressure game where Nottingham Forest is doing each and every single thing to score against Chelsea and then keep a clean sheet and win the game. बहुत बड़ी बात है. Massive respect to Chelsea Football Club. They have produced an outstanding performance आज के मैच में. कोई fault नहीं ले सकते. Maturity के साथ खेला, intelligence के साथ खेला. They got the goal that was required and उसके बाद they did the smart thing and they defended really well. So yeah, all credit to Chelsea. And अगर कोई ये कहना चाहता है डार्क आर्ट चाहिए वगैरह, अब देखो ये डार्क आर्ट्स करना पड़ता है. Sometimes the result is just too important, so it doesn't really matter what the tactics are if you just get it done. And I don't think Chelsea के डार्क आर्ट्स वगैरह कुछ था, but they defended really well and they had to defend really well because Nottingham Forest were attacking them with everything they had. In the Champions League and potentially a trophy to end the season. Yes, potentially a trophy. Oh. यहाँ मत बैठो यार. यहाँ मत बैठो लग जाएगी. And potentially the Conference League trophy to end the season, which would be a good way to end the season, of course. चलो, क्लॉप आज एनफील्ड आया हुआ है. आया हुआ है अभी भी होगा ना. सॉरी, वैसे मेरी गलती नहीं थी. चलो गाइज, मैं भी चलता हूँ. आई नीड टू ईट समथिंग. आई एम एक्सट्रीमली हंग्री. आई एम गोइंग टू वॉच. चलो, Callum Wilson is celebrating a loss. I wonder why. Why is he celebrating a loss of all things? Newcastle have qualified for the Champions League. That is good. Words का deal fail होने के बाद Bayern are trying for Mitoma. That is very interesting. Why Mitoma all of a sudden? Cheaper chicken. Is that what they want? Chelsea have qualified for the Champions League. Cole Palmer, no reactions whatsoever. We've done it with the youngest team in the division. Yes. And a big morale boost for these young players. Big morale boost for these young players. Qualifying for the Champions League. Next season is going to be different, obviously. And अब ट्रांसफर सीजन देखने में इंटरेस्ट होगा. लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी, चेल्सी, न्यूकासल all have qualified. So that is incentive for Isak to not leave Newcastle, and Newcastle to also reinforce. Chelsea will reinforce. City are, they're going to reinforce. Arsenal have to. Liverpool already have. So it's going to be extremely interesting to see कि next season क्या होता है. Mitoma is a left wing and they want a left wing who can dribble. I mean, Mitoma would be a good signing. And Mitoma has good experience from the Premier League. So, well, it does make sense somewhat. Chalo guys, chalte hain. Everyone enjoy your evening, enjoy your Sunday. Enjoy your Sunday evening. मैं कुछ जाके खाना वाना खाता हूँ. And then, I don't know, I don't think I'll do a gaming stream tonight. Maybe I'll do it in the morning at around 5 o'clock or something like that. But
Nothing for sure. Uh, Streams hoti रहेंगी. Obviously, I'll keep doing gaming streamings. I'm gonna be doing videos with Addy. I'm gonna be doing videos myself. So make sure you check that out. And yeah, if you haven't joined the Discord, join the Discord. And yeah, see you all very soon. Stay happy, stay healthy, stay safe. Enjoy your day. Chelsea fan, City fan, Liverpool fan, Arsenal fan, Newcastle fan. And if you value it a little bit, Aston Villa fan, enjoy your success. Qualified for the Champions League, qualified for Europe. Even Spurs, congratulations, qualified for the UCL. Well done. And yeah, that's it, I guess. Yuvraj, hello, hello. Sorry, late हो गया. कोई नहीं, man. That's fine. That's okay. You came. That's all that matters. निकल कह रहा है, bring on the conference final and the club World Cup. There is no season end. There's going to be so much football to watch. It's going to be crazy. And just like that, the 24-25 season comes to an end. Cue in the music. I actually like last season का music बहुत अच्छा लगा था मेरे को. But yeah, I mean this season also has been a roller coaster. Leicester City, Ipswich, and Southampton, of course, relegated. Feel sorry for them, but I do feel happy for Sunderland, who have qualified for the Premier League. Chalo guys, I'll see you guys later. Okay, good night and take care. Love you all. Signing off from Premier League 24-25.